Hey, easy day. If you're following my post market and my day trading idea, which I post on my social channel, it should be a very, very, very green day. Let me just explain why. Before I do that, let's see what I mentioned in yesterday's post market. Basically, I mentioned if it caps down and is near this 872 levels, like 30-40 points far, I look for a buying opportunity. That did not happen and it opened flat. So what did I do? Basically, this is the structure, right, where good volumes came in for towards the downside in both Bank Nifty and Nifty. And once this breaks, if you're watching my post market, you know what to do. So you can probably buy at VWAP, stop loss day low. And I did the same, bought at VWAP, which was 17,060 levels, and target was high. Why my target was high? Because I got a short in the market in second half, which I shared on my social channel. So exited at high once the high broke, which was like 40-50 points. This is in that range, 40-50 points from morning to 12:30ish. And then I shared a trade around, I think, 1:15 on my social channel, where I mentioned that if 130 close is below VWAP, I will look for a sell below 130 close. Stop loss will be 115 high or 130 high. And you saw the fall in the second half. So this is also on my I think all my social channels. I usually share this, and this also has been explained many times in my post market videos. If you've been watching how to trade this kind of a pattern, so nothing more to explain. Same thing happened in Bank Nifty. Did not trade Bank Nifty. I traded Nifty. I could have traded Bank Nifty also. Would have if once this broke. The problem was Bank Nifty broke after after Nifty broke. So wanted to trade. That is the reason I wanted to trade Nifty. So what am I planning on Monday? So good day greens in day trading. Red in positional calls, which I have. I did not exit those. Let's see if no plan for now. Basically, we'll see how price reacts on this near this low 16,821. If this breaks, if this does not break in first 1 hour, and then decide what to do. No other plans. Thank you. बहुत ही आसान दिन था. क्योंकि अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट देख रहे हैं, आपको ये पैटर्न हर पोस्ट मार्केट में समझाया मैंने, जितने भी पोस्ट मार्केट मोस्टली जब भी आता है ये वाला पैटर्न. और इस महीने तो काफ़ी बार आया है. और इंट्राडे में भी जो मैंने डे ट्रेड दिया था, वो भी उसने भी काफ़ी प्रॉफिट दिया, स्पेशली जब मार्केट रेंज में है. तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले हम डिस्कस करते कल के पोस्ट मार्केट में. कल का पोस्ट मार्केट का प्लान ये था ओपन पे कि अगर ये कैप डाउन होता है और इसके आसपास आता है 16,900 के आसपास, तो मैं ये वाला लो रख के बाय करूँगा 850. ये स्पॉट का चार्ट है. 816 850 रख के मैं बाय करूँगा. ऐसा हुआ नहीं, फ्लैट खुला मार्केट. तो सुबह मैंने कुछ किया नहीं. निफ्टी में सुबह डाउन वॉल्यूम्स आए थे. उस डाउन वॉल्यूम का हाई टूट गया था. जिस कैंडल इनिशिएट किया था उस कैंडल का हाई टूट गया था. तो इस केस में यूजुअली अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट देख रहे हैं, आपको पता है कि मैं यूजुअली वीवैप पे बाय करता हूँ. स्टॉप लॉस रहता है डे लो. वीवैप पे बाय किया. मैं चाहता था और प्रॉफिट्स लूँ इसमें, लेकिन मैंने डे हाई पे बुक कर दिया. क्योंकि मुझे 12 बजे के आसपास सिस्टम ट्रेड आ गया था शॉर्ट का सेकेंड हाफ, जो कि मैंने शेयर किया था अपने सारे सोशल चैनल्स पे 1 बजे के आसपास, शायद 1:15 के आसपास, मुझे याद नहीं. और शायद टेलीग्राम में लेट हो गया था, 1:30 हो गया था. पर वो मैंने शेयर किया था. क्या ट्रेड था, 130 अगर वीवैप के नीचे क्लोज होता है, 130 के नीचे सेल करिए. 130 का हाई या 115 का हाई स्टॉप लॉस रहेगा. और वही हुआ. तो ये भी एक ट्रेड कैप्चर किया और ये भी एक ट्रेड कैप्चर किया. और यूजुअली अगर ये टूटता है तो मैं वैसे 2 बजे के बाद ट्रेड लेता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम में था इसलिए मैंने इसके टूटने पे मैंने ट्रेड ले लिया था. और अब क्या है मंडे का प्लान, तो मैं देखूँगा कैसे रिएक्ट करता है मंडे 1 आवर क्लोज इस प्राइस के आसपास, जो कि है इसका लो है 16,828. अगर डिपेंड करता है, मैं अभी प्रोबेबिलिटीज़ नहीं बताना चाहता, पर कैसे रिएक्ट करता है उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या है. तो कोई प्लान नहीं है बेसिकली. थैंक यू.